How is it that they think of us? How is it that they are viewing us? And we think that that is the only parameter by which we are going to judge ourselves. Do you agree, yes or no? You can type in the chat box and I'll definitely take you from there. So, today, what I want everybody to focus on is to really think about how is it that you can build yourself up? How is it that you can grow in spite of challenges? Perhaps you don't come from a very affluent background and you really had to work hard to get where you are today. Perhaps your education background was such where your diction is not as clear as someone in your team. Perhaps you come from a small town and you feel that someone from an urban setup is much better educated than you. So you always watch your steps. So these tiny niggling things, I could go on and on. Sometimes it's about the kind of clothes you wear. You may feel that you don't have the perfect body for it. So you may be avoiding certain clothes. You may feel, ki, oh, I'm such a shy person, and I can't say my point in a group or in a team setting. So because I don't feel good enough for myself. I could go on and on and on. But I want all of you to think of one thing. While all these facets may be true, does it really matter? What really matters is, the value that you place on yourself. How is it that you feel about yourself? Now, as you can see, this image, it's a cup of coffee. Now, some of you may say, "Ooh, my God, it looks really yucky. It's so dark and it's so depressing." Someone may say, "Wow, these sepia tones, it's really exciting." And that mug of coffee looks very inviting. I love the smart, dark look. So, as you can see, all of us judge things based on our exposure and where we are at that time. So, when we talk of self esteem and self confidence, you can see I've written my name in bold. What is important is, however the situation is, however another person is interpreting it, what is really important is what I think of it. You and your opinion of yourself always has to be in bold, like you can see in red. It has to strike out in your mind. So, what is this self esteem? In simple words, it's belief in my own worth and abilities, that I matter without a stitch of clothing on, without any kind of nuances, with nothing. How is it that I feel that I am important? That basic sense of self respect that we talk about, that is self esteem. And it's my subjective evaluation. It sounds like a big word, but what it means is my own analysis of my own worth. Like often you will see many of us downplay ourselves. We don't know what we are worthy. We are always viewing ourselves on the basis of achievements, education, how much is my pay package, what is my address, what is my relationship status. Now, all these factors are outside of me. What is really inside me is how I think of myself. So, I want you to take a minute and think about what is it that is most important to you? What is it that makes you a worthy individual? I would really like it if you add on some comments here, because otherwise it'll be like I am lecturing. Because, till you don't learn how to value yourself, everything else doesn't matter. See, the best thing is Carl Rogers always said that when we accept ourselves the way we are ready to change. That is the curious paradox. I need to accept myself, literally like a newborn baby. If you see a newborn baby, that baby gurgles in joy. Does the baby know what race he or she belongs to? Does the baby know whether the baby is the firstborn or the lastborn or one in a series of siblings? Does the baby know of financial constraints in the house? Nothing. The baby just gurgles in joy because I am there. So I want you to really think of it. What is your evaluation of your worth? What is it that makes you feel that you are worthy? I want you to take a minute and write in the chat box, please. Because, a lot of times we are so focused outwardly that we forget that it's not issues or situations that hamper us or our self confidence, but it is what we think of ourselves. The most powerful motivator lives right here.
It lives in our hearts. How is it that I view myself? How is it that I feel good about myself? The fact that I'm living and breathing, God doesn't ever, decide that, oh, you are pretty, so you will breathe extra today. Oh, you are confident, so you will breathe. Oh, you are worthy because you've been a good human being, so you get to breathe today. He doesn't ration out. Most of us, if you feel, we take our breathing for granted. So even if you are in a situation today where you feel that some things are just not going well, remember just this one thing: God thinks that you are worthy and you are breathing because of that. Let that be your starting point of self esteem. Do you agree? So we all need some anchoring, you know. We need some anchoring to make us realize that yes, I am worthy. So as I see, most of us are very shy about putting our best foot forward, or we don't like praising ourselves. We feel very stupid. Sometimes we say we feel so cheap, and oh, that is such a bragger's attitude. No, it's not. Like we say na, if you love somebody, show it. So you first need to show yourself. So my one task for everybody is that think of yourself. How is it that you believe that you are worthy? Reflect on this thought. If you want to really grow your self esteem, plant that seed in your head today. Why do I respect myself? Why do I believe in my worth and abilities? And if you see, all of us here, all of us are educated, all of us understand certain things, and we know that as young children, when we were not confident, we've done a lot of things. Now you can think of it. For example, that coloring. All of us have done coloring as young children. Did we think that we were any of the master painters? We did not, right? We were not Raza, we were not Hussain Sahab, but we believed that, oh, I can draw very well. Most of us sang and danced also. But as we grew older, we had these voices which told us, oh, you don't sing well, itna mat gaya karo. Oh, you don't dance well, so don't dance. So we started getting inhibited. So if I have to grow my self esteem, first I have to plant that seed inside me. How is it that I find myself worthy? So do one activity that makes you feel you are worthy. Yeah, I'll share a personal example with you. As a young child, I was very fond of dancing. And then my mother put me in an Orisi dance class. Now, the class was very nice, the teacher was very good, but unfortunately, we were required to practice every time. I hated practicing by myself. So I wouldn't do the practice of the steps. So when I went in for the group class, I would fumble. In 2-3 months, I heard the teacher say, तुम ठीक से डांस नहीं करती हो, डांस करना आप छोड़ दो, तुम अच्छी डांसर नहीं हो. For 10 years after that, I never danced. Any socials were there, I felt shy to dance. Any dance participation which was there, I didn't want to participate. Now, tell me, was I a good dancer or a bad dancer? We will never know, because that time I lacked that basic practicing mentality. I felt that I had better things to do than practice boring steps, every day. So that actually stopped me from being the best that I could be. So my self esteem went down, and yet I didn't even know the cause. Now, as an adult, I remember sometime in college, I realized I like dancing. Whenever I hear music, I feel like moving. So one day I just started moving. Initially, it felt very awkward. Ki my God, koi hasega to kya hoga? How is it that people will feel? But bit by bit, I started feeling the music in my body and I started moving with it. Now, come rain, come shine, I love to do dancing. Formal dancing classes, still make me a little hesitant, but I challenge myself कि I believe in my own worth and my ability. I have feet, I can dance. So why not? How I feel when I dance is what is important. How it looks like to another person is their problem. Right. See, when you are, if I was a dancer who did dancing for a living, the technicalities were very important. Every step mattered. But today, as a human being who does dancing as a relaxation activity, it doesn't matter. So, think of such situations in your life where your self esteem may be low because of certain childhood incidents where you felt ki you were not good enough.
Perhaps you didn't practice enough. Perhaps there weren't ample opportunities. Whatever it is. So I want you to really keep reflecting on it, because today is the day you sow seeds of self esteem in yourself. Now, you may be amongst the few people who say that मेरे को तो लो सेल्फ इस्टीम होता ही नहीं है. आई फील वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ. मैं अपना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. कोई जोर से बोलता है सो आई एम वेरी श्योर दैट आई रिएक्ट, यू नो, कि मेरे बारे में बुरा मत बोलो. बट टुडे आई विल टेल यू देर आर सम साइंस ऑफ लो सेल्फ इस्टीम. First is whenever you're critical about yourself. Like, I'll give you a very small example. I often meet people उसे, अरे मैं रेड कलर नहीं पहनती हूँ या पहनता हूँ बिकॉज मुझे लगता है मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा. दैट इज क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ. हाउ डू यू नो आप पे अच्छा लगता है कि नहीं? हो सकता है किसी ने बोला है, लेकिन अगर वो पहन के आपको खुशी मिलती है, सो वाई विल यू नॉट वेयर समथिंग? So, this is being critical of yourself. Sometimes we say negative things about yourself, about our own selves. You know, what is it that we tell ourselves? कि ओ मेरे से तो ये काम नहीं होगा, मैं अच्छे से गाना नहीं गाती हूँ तो आई कैन नॉट सिंग हैप्पी बर्थडे, या मेरे से पैकिंग अच्छे से नहीं होगा, मेरे से ये अच्छा से नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ट्राई तो हम लोग कर सकते हैं. And you know, if you have to grow your self esteem, always remind yourself of small things that you did as a small child. You know, कि कई बार आप देखेंगे कि जब हमें मालूम ही नहीं था कि दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है मुझे या नहीं, वी यूज टू पेंट फ्रीली, वी यूज टू डांस फ्रीली, वी यूज टू प्ले फॉर द जॉय ऑफ प्लेइंग. So, you know, you can grow your self esteem. And yes, Shubhangi, the way you have said, seeking validation is also a sign of low self esteem. You know, I have a friend and she says, कोई भी फेस्टिवल आता है, दिवाली या दुर्गा पूजा, वो बोलती मैं अपने लिए कभी, इनफैक्ट दे सेलिब्रेट दुर्गा पूजा इन अ बिग वे, तो वो बोलती कभी भी मैं अपने लिए अपना साड़ी या सूट्स लेने नहीं जाती हूँ, मेरी मदर मेरे लिए चूज़ करती हूँ. सो हियर इज़ दिस स्मार्ट कॉन्फिडेंट लेडी इन हर 40s विद अ वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशन, और उसको क्या लगता है कोई और उसके लिए बेटर कपड़े ले सकता है. क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? Many of us think कि someone else knows better about us. So we have to stop seeking validation. We have to stop thinking कि किसी और को मेरे बारे में, मेरे लाइफ के बारे में बेटर पता है. हो सकता है उन्हें पता है, लेकिन जॉय ऑफ सेल्फ डिस्कवरी भी तो कुछ होती है, राइट? तो अगर हमें सेल्फ इस्टीम चाहिए तो हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि इस बॉडी में एक ही आदमी रहता है, दैट इज़ मी. और मुझे यही बॉडी मिली हुई है और अपने लिए ब्रीदिंग मुझे खुद ही करना होगा. अनलेस एंड अनटिल मैं लाइफ सपोर्ट पे हूँ, और आज 110 हम लोग सब जो यहाँ हैं, हम लोग कोई लाइफ सपोर्ट में नहीं है, राइट? हम लोग आराम से खुद ब्रीद करते हैं. हम लोग सब अपनी बॉडी में बैठे हुए हैं. यहाँ तो कोई मुझसे हॉस्पिटल बेड से बात नहीं कर रहा है लाइफ सपोर्ट क्रिटिकल इक्विपमेंट के साथ. तो हमें ये जानना है कि ये छोटी छोटी जो डिसीशंस है लाइफ के, हमें उसे खुद ही डिसाइड करना है. मे बी मेरी चॉइस उतनी अच्छी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? और जैसे जैसे हम अपने आप को फेमिलियर करते जाएंगे, हमारी चॉइस भी अच्छी होने लग जाएगी, और मोर इम्पॉर्टेंटली हमें अपने बारे में अच्छा फील होगा. सो इफ़ वी आर ग्रोइंग आवर सेल्फ एस्टीम, वी हैव टू रियलाइज दैट लाइक आई ब्रीथ इन माई बॉडी. क्या हम लोग सब स्टमक से एकदम अच्छे से ब्रीथ करते हैं? नहीं. मोस्ट पीपल आई सी, यू नो, वी ब्रीथ वेरी शैलो. हम लोग फास्ट फास्ट ब्रीथ करते, रियलाइज भी नहीं करते. बट क्या हम लोग हर सेकेंड जज करते हैं अपने आप को कि मेरे को ब्रीदिंग अच्छा करना नहीं आ रहा है, सो माई फ्रेंड कैन ब्रीथ फॉर मी, माई सिस्टर कैन ब्रीथ फॉर मी, माई फादर कैन ब्रीथ फॉर मी, माई टीम मेंबर कैन ब्रीथ? हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं, राइट? सो इन द सेम वे वी हैव टू मेक our life about making own choices. So slowly, slowly, self-respect will grow in us. Do you agree? Yes. Another way in which we show our low self-esteem is when we don't accept compliments. Thank you. When we don't, you know, a lot of people I've seen कि, you know, often in parties I've seen when somebody is complimented on how nice they are looking, they'll say, oh ये तो black काच पहनी हूँ इसीलिए thin लग रही हूँ, oh आज hair cut कराया इसीलिए आज मैं अच्छा लग रहा हूँ. क्यों? If someone compliments you,
preen like a young child and say, thank you very much. When you start doing it, that means you are showing people that you are worthy of respect. And at the end of the day, you yourself believe ki you are worthy of the praise. No clothes, no haircut, no weight loss can actually make you feel good unless and until you feel good about yourself. So if next time someone compliments you, accept it with pride. Smile tooth to tooth and grin. Look at them in the eye and say thank you very much. Do not put yourself down, because क्यों हम में low self esteem आता है? Because we keep focusing on our negatives and we ignore our achievement. For example, आज आपका work day है, 10 चीज आपसे अच्छा हो रहा होगा, मे बी एक असाइनमेंट आपसे हो ही नहीं रहा है, तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं? देखो, मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है। जो सुबह से आपने 10 काम किया, वो किसने किया? आप अलादीन तो नहीं है, जीनी है क्या आपके पास? है तो ग्रेट, बट मोस्ट ऑफ अस वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स, राइट? सो फोकस और नेगेटिव में नहीं करना है, आपको अपने अचीवमेंट्स इग्नोर नहीं करना है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी अचीवमेंट्स होती है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू, लास्ट टाइम लाइक अलीशा राइटली सेड, आई हैव हैड अ फ्यू सेशंस विद यू, स्टार्ट जर्नलिंग, राइट अबाउट योर अचीवमेंट्स। धीरे धीरे हमारी एबिलिटी तभी एनहांस होती है when we can focus on our achievements. And yes, there will be some negatives that we have, but क्यों negative दिखता है हमें? That is an area for improvement. रूमी जो है, very famous सूफी सेंट जो है, उन्होंने कहा था, it's through the gap और थ्रू दी वूंड दैट लाइट कैन एंटर। तो अगर कोई नेगेटिव्स है आपके लाइफ में, कोई चीज़ के कारण आपको पेन है, अंडरस्टैंड कि वो स्कोप फॉर ग्रोथ है, कि मुझे क्यों इतना दुख हो रहा है, कि मैं कैसे, लेट्स से कि आपको लग रहा है कि जो आपको पे मिल रहा है इज़ नॉट गुड इनफ, यू हैव टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वन इज़ यू कैन फील बैड, द कंपनी इज़ नॉट गिविंग इनफ, मेरे में क्वालिफिकेशंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप बोलोगे लाइट कहाँ से आएगा मैम? लाइट ये है कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है टू डेवलप योर सेल्फ, कि कैन आई टेक एन एक्स्ट्रा कोर्स, कैन आई कट डाउन ऑन सम कॉस्ट्स, नॉट टू फील सो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड। तो इस तरह से करके हम लोग जो है कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन में स्कोप फॉर ग्रोथ होता है। और जब हम लोग वो स्कोप फॉर ग्रोथ नहीं देख सकते हैं, दैट इज़ अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। हमें कहीं लगता है कि ओ माई प्रॉब्लम्स आर मच बिगर देन मी, सो आई हैव टू लर्न that anything that challenges me means it's an area of potential growth. Remember, no problem comes without solutions. And if there is a problem, means there is a solution there. You will see, as we grew in life, our challenges became bigger and bigger. Yes or no? The question papers became much tougher. In school, we probably had to write initially when you start off in class 1, class 2, you have to give short answers. By the time you reach college, you are expected to write 5 pages, 10 pages, especially if you are in the humanities stream, right? Yeah, even commerce में जो basic theoretical subjects रहते हैं, you have to write a lot. Why? Because as you grow older, as you get skills, the paper of life gets tougher and tougher. So आपको ये करना है कि you have to understand that if problems are coming, do not feel sad, depressed, anxious. If sadness is there, depression or anxiety is there, I won't go into much detail on these topics today because we've covered them in other sessions and we'll probably cover them again. But अगर ये है तो आपको यही देखना है कि if you are sad, then it is an opportunity for you to grow out of that situation. Right? Because negativity क्यों हम में आती है? Because somewhere we are telling our mind, I can't cope with this situation. हम क्यों डिप्रेस्ड होते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम्स हमसे बड़ी हैं, या जिनके साथ हम रहते हैं हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वर्क में है, सो वी फील दैट द प्रॉब्लम और अदर पीपल आर मच बिगर देन अस। बट वी कैन ओनली ग्रो व्हेन वी रियलाइज कि इट्स ओके, इस सिचुएशन में मुझे दिक्कत लग रही है ना, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट? सो मोमेंट वी गो इन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड, ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया, इससे क्या है, हम बहुत
कुछ सॉल्व कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो हमें क्या है, जो हमारी लिम्बिक सिस्टम है, जो हमेशा हमारे इमोशंस को उथल पुथल करती रहती है, और वो हमारे सर्वाइवल से लिंक्ड है। हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है माय गॉड, इस सिचुएशन से तो हम निकल ही नहीं सकते। तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि नहीं, it's okay, this situation is challenging, but how can I grow from it? So moment I go into a problem solving mode, क्या होता है, मेरा ब्रेन जो है एक्सपैंड कर जाता है। इट गिव्स मी दैट बैंडविथ टू एक्सप्लोर अदर वेज ऑफ गोइंग। आप देखिए, कभी भी अगर आप ट्रैफिक जैम में हो, वन वे इज यू कैन जस्ट कीप ग्रम्बलिंग कि माई गॉड दिस इज सो बैड, व्हाट डू आई डू। अनदर वे इज कि दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छा सुन लें यूट्यूब में, कोई पेंडिंग वर्क है, अपना पेन निकाल करके उसको कर लें, या अपने लैपटॉप पे काम कर लें, अपने हेडफोन्स को लगा करके कुछ अच्छा सुन लें। सो वी हैव टू रियलाइज traffic jam is not in our control, but our response to the traffic jam is in our control. Now you may say कि मैम ये तो बहुत ठीक है, अगर ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, of course in COVID times and with hybrid work culture many of us are working from home, that may not apply. So you may say, but let's take a regular world, which I am hoping is going to be the norm soon. And I always feel that there's always scope for hope. So it may take 3 months, it may take 6 months, but yes, the world as we knew it is definitely coming back. So अगर आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हो, तो आप बोलेंगे हम तो ऑफिस लेट पहुंचेंगे। सो यू हैव टू रियलाइज दैट दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू leave 15 minutes early, to do my time management properly. As an adult, we can't keep blaming situations, because if we keep doing it, remote control is always in another person's hand. So these are some of the signs of low self-esteem. But you introspect in yourself. आप किस तरह से अपनी सेल्फ एस्टीम को छोटी छोटी हरकतों से रोज लोअर करते हैं। Now let's see, what is the sign of healthy self-esteem? Use hopeful statements. मैंने अभी आपको लाइव डेमो दिया hopeful statement का कि yes, things are going to get better. But and you know, when you treat yourself with kindness and encouragement, that is healthy self-esteem. कि acknowledge कि yes, थोड़ा सा ना अभी क्या है, social isolation है, तो थोड़ा सा मैं stressed हो जाती हूँ. Understand that that is a natural response. So, you know, when you treat yourself with kindness, you will also be able to encourage yourself. What I started doing is, these COVID times, mein, early on, I wouldn't take time off as such, you know. Now, I fix 3 hours to watch TV on the weekend. Now, you will say that is a very funny solution. But I realize sometimes now, I just want to get lost in the world of fantasy. I love watching periodic drama, any kind of old serials. अब हिंदी में, English में बहुत available है, you know. So I see something which is so different from my life now and in another era, and how they get beyond those situations. It gives me courage. You know, like other day मैं डाउनटन एबी देख रही थी, एंड आई सॉ कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर जो बहुत रिच भी थे, दे ट्राइड टू बी यूजफुल, कुछ थे जो ग्रम्बल कर रहे थे। सो आई व्हेन आई सी सच थिंग्स आई रियलाइज कि माय गॉड, वर्ल्ड वॉर 2 में भी तो लोग इतने मुश्किल से उसको मैनेज किए थे। उनके होम्स नहीं थे, लव्ड वंस की डेथ की खबरें आ रही थी, देयर वाज वायलेंस एवरीवेयर, they survived it, right? And the world became better. So this also will go away, and there will be something better which is coming for all of us. We didn't ask for it, but since aa gaya hai, it has taught us to be a little more mindful about our mental health. It has taught us to value our relationships more. It has taught us basic hygiene, and it has also taught us that don't take anything for granted. So is tarah se, when you treat yourself with kindness and encouragement, your self esteem will grow. Next, it's very important to forgive yourself. Now, all of us do things for which, we realize later on कि नहीं करना चाहिए. Sometimes it's screaming at a child in the house. Sometimes it's about doing certain things that we are not proud of. I won't go into the moralistic zone to say right है, wrong है. कई बार प्रेजेंटेशन बनाना है, भाई आप कहीं से कॉपी कर लेते हो, आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था. So there are small, small things, which make us feel very guilty. Sometimes it's loss of temper, sometimes it's agitation, sometimes it's irritation. So कुछ भी आपके दिमाग में है, forgive yourself. Because
टू अर्र इज़ ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं. कई बार हम ऐसा काम करते हैं जो अच्छा नहीं रहता है, एंड बाद में हम रिपेंट करते हैं, रिग्रेट करते हैं. तो उस समय फॉरगिव योर सेल्फ. इफ़ यू कैन मेक अमेंड्स. अगर आपने लेट्स से कहीं से कुछ किया है, वर्क में कुछ किया जिसमें आपको लगा कि नहीं ये मेरी एथिक्स नहीं थी, सो फॉरगिव योर सेल्फ, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारी सेल्फ इस्टीम इतनी लो हो जाती है बिकॉज हम लोग केवल शुड एंड मस्ट स्टेटमेंट्स में रहते हैं. आई शुड डू इट इन दिस वे, ही मस्ट टॉक टू मी लाइक दैट. तो ये शुड एंड मस्ट जब हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो एक टर्म है टिरनी ऑफ शुड्स, कि जैसे आप सोचिए कि हम लोग उसमें एकदम बंध जाते हैं. किसी ने आपसे रूडली बात किया, स्पेशली मैं पर्सनली ये प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि मेरे स्पाउस का अगर मूड अच्छा नहीं है, ज़ोर से बोल दिया, पहले मुझे बड़ा ख़राब लगता था. अब मैं अपने आप को बोलती हूँ, यस आई वुड लाइक इट इफ़ ही स्पोक टू मी नाइसली. और पहले मन में रहता था ही शुड स्पीक टू बी नाइसली, तो क्या है, एंगर होता था, इरिटेशन होता था. नाउ आई टेल माई सेल्फ आई वुड लाइक इट इफ ही स्पोक टू बी नाइसली, बट परहैप्स देर आर टू मेनी थिंग्स ऑन हिज माइंड एंड ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज वर्ड्स. तो इस तरह से बोलने से क्या होता है, किसी का बिहेवियर भी मैं पर्सनलाइज नहीं करती हूँ. देर इज़ नो शुड फॉर एनी बडी एल्स और फॉर माई सेल्फ. तो क्या आई एम फ्री टू थिंक हेल्पफुल थाट्स. मैं पॉजिटिव पे फोकस कर सकती हूँ कि अरे मेरा पीस ऑफ माइंड मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. अगले का वे ऑफ टॉकिंग, अगले का वे ऑफ बिहेविंग फ्रैंकली इज़ नॉट दैट रेलिवेंट इन माई लाइफ. तो धीरे धीरे क्या होता है, मेरी एंकरिंग अपने अंदर खुद होने लग जाती है. एंड आई हैव सेल्फ इस्टीम. इफ़ आई बिलीव आई एम वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, तो क्या मुझे मैटर करेगा आप मुझे रिस्पेक्ट करो या नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, वी डोंट बिलीव वी आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. तो कोई भी कुछ भी बोलता है तो हम लोग उसको बहुत पर्सनली ले सकते हैं. सो आई रेकमेंड, लाइक आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. अगर कोई मुझे बोलेगा, प्रगति यू हैव ब्लू आईज, will I need to go to the mirror to check it? I know I don't have blue eyes. If someone tells me, Pragati, you have gray hair completely, will I believe? I will not believe it. Because I know what my hair looks like, I know what my eyes look like. But हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने बारे में श्योर नहीं रहते हैं कि वी आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. इसीलिए हम लोग को लगता है कि किसी और का बिहेवियर, उनका बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है, दे शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. तो इसीलिए हम लोग क्या है, अपना रिस्पेक्ट जो है सोचते हैं कि बहुत ट्रेडेबल कमोडिटी है. कोई अच्छे से बात करे तो मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई अच्छे से बात नहीं करे तो मेरा रिस्पेक्ट ले जा रहा है. माई टेक इज़, a sign of healthy self-esteem is that you have learned that you are worthy of respect. Anyone else's behavior cannot take it away. Okay? सो रीलेबल अपसेटिंग थाट्स. कोई भी अपसेटिंग थाट्स आपके दिमाग में आते हैं कि उसने मुझसे ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, यही बोलिए कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो. रीज़न में जस्ट भी कि ही इज़ बैड टेम्पर्ड, द रीज़न में जस्ट भी कि शी इज़ पार्शियल, रीज़न में जस्ट भी कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड. एंड बट एट दैट पॉइंट यू हैव टू एनकरेज योर सेल्फ कि वो उनकी चॉइस है. दे डिसाइड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, इट्स नॉट सूटिंग मी. So I always have a choice. I can learn to detach. I can learn to shift my focus elsewhere. I can learn not to personalize it. तो इस तरह से if I start thinking, you know, I can work on my self-esteem in such a way that in time I see that I am a confident person. So how is it that you will improve your self-esteem from where you are? Firstly, identify and challenge your negative beliefs. I want you कि आप एक नोटबुक में लिखें 5 नेगेटिव बिलीव्स जो आपके अंदर हैं. नेक्स्ट 20 days उस पर वर्क करिए कि ओके, let's say if you believe that I'm not a good writer. One more thing I hear from people is, because like I do live sessions, कि Pragati, you are such a good speaker, I'm not a good speaker. And I say, really? Why do you say that? Are you dumb? Listen, नहीं. तो when if I can speak, so can you. तो इस तरह से अगर आपके अंदर में कोई भी नेगेटिव बिलीफ है उसको चैलेंज करिए.
एड्रेस करिए. अगर लेट्स से पब्लिक स्पीकिंग एक जोन है जिसके लिए आई हैव सीन दैट पीपल हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव बिलीफ अबाउट देमसेल्व्स, एंड स्पेशली वर्क सिनेरियो में क्या होता है, जब प्रेजेंटेशंस देना होता है या टीम में अपना पॉइंट बोलना होता है, भाई कई बार प्रमोशंस उस पर डिपेंडेंट होती है, टीम अप्रेजल्स होता है. सो वी फील कि आई विश मैं थोड़ा वोकल होता या होती, देन आई वुड गेट अ बेटर रेटिंग. सो हाउ विल यू चैलेंज दैट नेगेटिव बिलीफ? प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इनिशियली जब मुझे थोड़ा सा हेजिटेंसी होता था, आई ऑल्सो यूज टू प्रैक्टिस 10 years बैक. सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्फिडेंस आपका जो है बढ़ता जाएगा. आइडेंटिफाई द पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ. लाइक आई रियलाइज कि वेन आई टॉक I smile. My eyes also seem to smile. And so that connects with people. तो इस तरह से अपने आप को देखिए मिरर में. आइडेंटिफाई करिए आपका क्या पॉजिटिव है. आपकी वॉइस क्वालिटी, आपका डिमिनर, आपका सॉफ्टनेस. आइडेंटिफाई दैट एंड धीरे धीरे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करिए और नेगेटिव वंस को अवॉइड करिए. कई बार नेगेटिव वंस कुड बी द क्लोजेस्ट पीपल यू लिव विद, योर पेरेंट्स, आपके ब्रदर या सिस्टर, सिबलिंग्स रहते हैं, आपके नेबर्स, आपके चिल्ड्रन, आपके हस्बैंड. तो आप बोलोगे उनको कैसे अवॉइड किया जाए. हियर वी कैन अवॉइड मेंटली. फिजिकली किसी से डिस्टेंस नहीं करना है, लेकिन मेंटली क्या है, उनको उनकी बात को आया राम गया राम करिए कि इट्स ओके, यू फील लाइक दिस, दैट इज योर परसेप्शन ऑफ मी, बट इट डज नॉट मैटर टू मी. नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. आपको अक्षय कुमार पसंद है? Yes or no? I want everybody to give me an answer. Okay. So some of you like Akshay Kumar, some of you don't like Akshay Kumar. How does it matter? क्या उसको जो है, उसको तो जिस प्रोड्यूसर को साइन करना है वो करेगा. जिसको नहीं काम देना है, जिसको लगे कि भाई ही इज ओवर द हिल, वो उसको नहीं काम देगा. जिसको देना है वो दे ही रहा है. सो लिटरली ट्रीट योर सेल्फ लाइक दैट. कि अगर कोई लव्ड वंस के साथ आप रहते हैं जिनका आपको ओपिनियन नहीं पसंद है, लिटरली थिंक ऑफ इट कि मेरी लाइफ में क्यों मैटर कर रहा है. अगर ये पर्सन मेरे लिए नहीं सपोर्टिव है तो क्या है, आई विल अडेप्ट. कोविड टाइम्स में क्या हम लोग सब ने अडेप्ट नहीं किया? वायरस तो हमारे साथ हर समय था, हमारे दिमाग में था, हमारे एनवायरनमेंट में था, हमारे टीवी स्क्रीन्स में था, और कई जगह तो दहशत फैला दी. लेकिन ऑल 110 ऑफ अस, वी तो आर अलाइव ना. Some of us have gone through COVID also and come up unscathed. We may have lost our loved ones. तो उसी तरह से हमें कुछ भी नेगेटिव है ना, अवॉइड करना सीखना होगा. हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करना है, फर्स्ट विद आवर ओन सेल्फ एंड देन फाइंड सम अदर्स हु आर पॉजिटिव. अगर घर में पॉजिटिव नहीं है, कम्युनिटी में बिल्ड करिए. उस दिन मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वेब डेवलपर से मिली. उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत सक्सेसफुल हो गया काम में, बट आई रियलाइज समथिंग वॉज मिसिंग. सो आई स्टार्टेड ट्री प्लांटिंग. ही सेड कि हर सैटरडे सुबह मैं ना 10 ट्री प्लांट करता हूँ. सो ही सेड आई हैव अ कम्युनिटी नाउ, आई प्लांट ट्रीज एंड नाउ आई फॉर्म्ड अ स्मॉल एनजीओ. मेरे कम्युनिटी से लोग आके ट्री प्लांट करते हैं, और मेरे फ्रेंड्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि भाई किसी का भी बर्थडे हो तो आप इसमें कंट्रीब्यूट करिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड किया थ्रू अ कॉज. So don't focus so much on negative ones that are there in your life. Move beyond that. Give yourself a break. So this is how we very concretely avoid negative relationships that we live with day in and out. With mental detachment, not physical detachment. Physical detachment की criteria भी होती है, but that is separate. And कभी abuse dynamics है या बहुत सारे अदर डायनामिक्स हैं, तब हम लोग फिजिकल डिटैचमेंट के रेलम में जाते हैं. अदरवाइज मेंटल डिटैचमेंट यूजुअली helps us get harmony first in our own life and then in our relationships. Become assertive. Learn to say no, but not no, very softly, in a very nice, calm, assertive manner. Improve your physical health. Take care of your basic physical health. Mind body integration बहुत ज़रूरी है. Take on challenges. Do something new which is seems difficult. What I tried, I was sharing the dance experience, so I'll give you another example. I always feel shy to do the garba, but I'm very fascinated. Since I saw that movie of Aishwarya Rai where she does garba, I'm not getting the name,
सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय. आई नो मैं थोड़ी मूवीज़ की ज़्यादा एग्जाम्पल आज दे रही हूँ, बट दैट इज़ सो दैट यू कैन रिलेट वेरी वेल. एंड इट्स नॉट दैट बहुत हैवी ड्यूटी एग्जाम्पल्स हमें चाहिए. स्टूपिडेस्ट ऑफ चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है. तो मेरा बहुत मन था. एंड सडनली एक गरबा वर्कशॉप हो रहा था. सो आई सडनली एनरोल्ड फॉर इट, 3 day. फर्स्ट डे बड़ा ऑकवर्ड लगा कि मैनरिज्म्स ये वो. बट व्हेन यू टेक ऑन अ चैलेंज यू एंजॉय योर सेल्फ. सो आई एनकरेज ईच वन ऑफ यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ एस्टीम. कोई चीज़ जिससे आपको हिचक है ना, थोड़ा सा वो आप ट्राई करिए. यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. So, and in time, what is going to happen is you are going to get confidence. Now, what is confidence? It's an attitude, the belief that you have in your own self. I matter. एक सेल्फ रिलायंस का फीलिंग होता है कि मैं अपने लाइफ को मैनेज कर सकता हूँ. इट्स अ बेसिक सेटिस्फैक्शन ऑन हु यू आर. एंड यू विल ऑलवेज हैव अ फीलिंग ऑफ इनर फायर. कि यस, कि कुछ भी है, कुछ खास है. आपको याद है अभी वो जो कैडबरी एड है अभी आया है, दे हैव रीहैश्ड इट इन अ वे. आप देखेंगे पहले एक गर्ल आती थी डांसिंग, देयर वाज अ क्रिकेटर हु वाज हिटिंग इट. आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू सी इट. बहुत मज़ा आएगा वो देख करके. एक फीलिंग ऑफ इनर फायर कि किसी के जो एक बोलते हैं ना, जहाँ बहुत सेल्फ रिलायंट हो और जहाँ आप सेलिब्रेट कर सकते हो पहले अपने आप को और किसी और की खुशी भी. इससे क्या है ना, जब हमें अपने में एक बेसिक सेटिस्फैक्शन रहता है तो हम कुछ भी लाइफ में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं. अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हमें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हम दूसरे के कुछ भी प्रोग्रेस हो तो उसको हम लोग बहुत जज करते हैं. वी ट्राई एंड टेक आउट फ्लॉज इन अनदर. वी गेट वेरी सेंटर्ड ऑन वॉट द अदर पर्सन इज डूइंग. बट वेन वी आर बेसिकली कॉन्फिडेंट, we radiate that sense of satisfaction that yes, I can manage my life. For me, when we show self reliance or when we feel self reliance, that is confidence. एंड मोस्ट पीपल थिंक कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है. कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अगर आप एकेडमिक्स में बचपन से अच्छे रहे हो, एथलेटिक्स में अच्छे हो, या आज आपको अच्छा पे पैकेट मिलता है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आप दिखने में अच्छे हो. दीज आर ऑल फैसेट्स. बट एक्चुअली क्या है, हर कोई कॉन्फिडेंस को अपने अंदर जर्मिनेट कर सकता है. क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो कई लोगों, nobody is born with it. Lot of times people feel कि नहीं, people are born with it. What I have seen, confidence is a skill that everyone can learn. Now let's see, do you lack confidence? One sign that you lack confidence is when you're constantly seeking approval from others. जब आपको लगे कि मैं क्या कर रही हूँ ठीक है कि नहीं है. नहीं, खुद डिसाइड करिए. कुछ डिसीशंस राइट होंगे, कुछ डिसीशंस रॉन्ग होंगे, बट धीरे धीरे आप देखेंगे राइट डिसीशंस की मात्रा बढ़ती जाएगी और रॉन्ग डिसीशंस की मात्रा कम होती जाएगी. And in fact, a lot of times why we lack confidence is because as young children हमें हमेशा लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए डिसाइड करेंगे. तो अगर आपके घर में यंग बच्चे भी हैं, आई एनकरेज यू कि उनको आप मत बोलिए क्या करना है. कई बार वो लोग सिंपल चीज़ ही पूछेंगे कि ये टी शर्ट पहने कि वो टी शर्ट पहने. टेल देम, तुम खुद डिसाइड करो बेटा. तो धीरे धीरे क्या है, एक कॉन्फिडेंस आएगा इस सिंपल एक्ट से. That I can make choices breeds confidence inside me. What is another sign that I lack confidence? Bragging. अगर आप कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं कि अरे मेरे पास ये है वो है, दैट इज एक्चुअली अ साइन दैट यू लैक कॉन्फिडेंस. आपको लगता है कि बढ़ा चढ़ा के बोलने से ही तभी आप वर्दी हैं. अदरवाइज क्या है, आप में कुछ है नहीं, अंदर से आप खाली हैं. थर्ड साइन कि आप देखेंगे कि कई लोग जो होते हैं ना, अपनी बात को पलट देते हैं. देर इज़ अ लैक ऑफ असर्टिवनेस इन देम. सो अगर आप कभी भी अपने व्यू पॉइंट पे स्टिक नहीं कर पाते हैं, दैट शोज अ लैक ऑफ assertiveness. One more sign that you could work on your confidence is when you are very conforming. कि आप देखेंगे कई लोग जो है कुछ भी बात हो उसको मान लेते हैं. वो लोग अपने आप के लिए सोचते ही नहीं हैं.
जैसा कि ये बोल रही है वैसा ही, जैसा सब करे वो करे। क्यों? पहले जानिए फिर मानिए। किसी को भी एकदम शीप के जैसे जो बोलते हैं ना, भेड़ चाल मत चलिए। थिंक, इफ आई एम डूइंग समथिंग, व्हाई एम आई डूइंग? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी सरप्राइजिंगली शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई लोग आप देखेंगे कि खूब जोर से हंसते हैं, खूब लाउड क्लोथ्स पहनते हैं, या जनरली क्रिएट अ बिट ऑफ रकस जहाँ भी हो, तो लोगों को लगता है वो कॉन्फिडेंस है। एक्चुअली इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड वन मोर टेलिंग साइन दैट आप में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जब आप हमेशा किसी को कॉपी करते हैं। उनके पास वो है, हमारे पास तो नहीं है, अरे मेरे पास भी ये है। जब हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि भाई कि हमारे पास कुछ है, दैट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आजकल आप देखेंगे मोस्ट ऑफ अस वी स्पेंड मनी ऑन बाइंग थिंग्स दैट वी डोंट नीड। वाई? बिकॉज एवरी वन एल्स इज डूइंग इट। चाहे वो हमारा वेकेशन चॉइस होता है, चाहे डिनर का चॉइसेस होता है। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग, what are the best restaurants to go to? Does it fit your budget? Do you like that kind of food? People don't even stop to think about it, but they just want to keep up with everyone else. So, next time you ask for too many recommendations, ask yourself first, is it because I want to blend in with everyone? Because I feel जो सब कुछ कर रहे हैं वही अच्छा है, and without any kind of input, I will not be able to decide. That shows a lot of uh, room for growth as far as confidence is concerned. Now, how will you build up your confidence? Firstly, focus on own potential, not limitations. कि कहाँ से मैं अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ। हाउ इज़ इट दैट आई कैन ग्रो आउट ऑफ दिस सिचुएशन? कि कोई भी चीज़ जिसमें मुझे कंफर्टेबल नहीं लगे, वहाँ पे क्या है, दैट इज़ एन एरिया ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ। In fact, psychologists कहते हैं, and there's a lot of research on it, most of us die with 90% of our potential undiscovered. So focus on your own potential. अगर कोई चीज़ से आपको तकलीफ है ना, स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अपने किस पोटेंशियल को टैप करके इसके बियॉन्ड जा सकता हूँ। नेक्स्ट इज डिटर्मिन टू बिकम सेल्फ अवेयर। कि अंडरस्टैंड कि आई हैव टू नो माई सेल्फ। दे से ना, टू नो योर सेल्फ इज टू नो गॉड। सो फर्स्ट यू हैव टू बिकम अवेयर कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे वीकनेसेस क्या हैं, हाउ इज़ इट दैट आई व्यू लाइफ इन जनरल। सो व्हेन आई लुक एट things with that kind of a focus, what happens is my self awareness gives me the strength. I acknowledge the truth. मे बी मेरी एकेडमिक्स उतनी अच्छी नहीं थी, मे बी मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहे, सो वॉट, आई कैन स्टिल ग्रो। सो इस तरह से व्हेन आई रिप्लेस सेल्फ क्रिटिसिज्म विद रेगुलर पॉजिटिव टॉक। इन वन ऑफ माई प्रीवियस सेशंस मैंने आपको एफर्मेशंस के बारे में बताया था। आई लव माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम कॉन्फिडेंट। इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस रोज अपने आप को बोलना है। सो धीरे धीरे आप देखेंगे दे बिकम योर रियलिटी। वन मोर इम्पॉर्टेंट फैसेट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इज आपको प्रिपेयर और प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको ओडिसी डांस का एग्जाम्पल दिया थोड़े समय पहले। इसका मतलब क्या है, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो कोई इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन आ रहा है या कुछ भी आपको परफॉर्मेंस कहीं करना है, प्रैक्टिस करिए। जब आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। एंड कुछ भी चीज़ का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से केवल कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय enthusiastic action. We have to show some kind of action. So this in a nutshell talks about confidence and self-esteem. Now I'll open it out for questions.